ये नहीं आता। ओके, good afternoon everyone. Good afternoon students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon everyone. Vanshika Suri, Yes, ma'am. can you please start with the prayer? Okay, ma'am. Yeah, sure. All of you please join your hands and close your eyes. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom comes, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Amen. So let's start the lecture. We were doing retirement of a partner in the previous class. Is my voice audible? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. In the previous class, we have done the calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio. Today we'll try to do two topics, that is this one, calculation of gaining ratio and treatment of goodwill. Okay. Now take out question number 1. So zoom it. If you're having books, just take it out. Gaining ratio. The question is A, B and C are equal partners in a firm. B retires and the remaining partners decide to share the profits and losses of the firm in the ratio of 5:4. Calculate the gaining ratio. इस क्वेश्चन में A, B और C तीन पार्टनर्स हैं. A, B, C में B रिटायर हो गया. They were equal partners. That means the ratio will be 1:1:1. Okay. Or new ratio after B's retirement will be 5:4. So you have to calculate the gaining ratio. Question is clear? Yes, ma'am. Okay. Now let's look at this thing. Chalo. The page is visible? Yes, ma'am. Let's start. Solution 1. First of all, write the formula for gaining ratio. So write gaining ratio is equal to new share minus old share. Minus old share. Old share of partners A, B and C if they are equal partners. So it will be 1:1:1. Now new ratio. New share of the partners A, B and C is no. यहाँ पे क्या हो? B retire हो गए यहाँ पे. B got retired. B retires. Is 5:4. So 5:4 is the new ratio of A and C. Now apply the formula. This one. Gaining ratio is equal to new ratio minus new share. The new ratio minus old ratio. Old share we can say. Let's calculate A's gain. It will be new क्या है देखो 5/9 minus 1/3. It will be 2/9. Understood? Speak beta. Yes, ma'am. Okay. Next देखो अभी C is gain. Again the same formula. New share minus. Very good Sharon, your answer is right. New share minus old share. The new share क्या है देखो बेटा 4/9 minus old हमने निकाला हुआ 1/3. So it will be again 1/9. So the gaining ratio of the partners A and C, it will be 2:1. 2/9 is to 1/9. Understood? First question is clear? Yes, ma'am. Number 8 is question number 7. Look at the question number 8, solution 8. Just check it out. Kangli, Mangli and Sanvari. है ये वाला question आपकी बुक में? It is there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, let us calculate this question. देखो जरा बेटा. Three partners are there. Kangli is to Mangali is to Samli. ठीक है?
There are three partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2, 4:3:2, ठीक है. कंगली जो है वो रिटायर हो रहा है, ये कंगली रिटायर हो रहा है, ठीक है. Assuming मंगली and शामली will share future profits in the ratio of 5:3. ये आ गई इनकी old ratio. और after the retirement of कंगली new ratio will be क्या होगी? It will be 5:3. We have to calculate the gaining ratio. चलो आ जाओ, देखो यहाँ पे. So gaining ratio formula is new share minus old share. फॉर्मूला लिखो बेटा, क्या है? मंगली का निकालो पहले आप. मंगली's gain, it will be 5/8, that is a new share, minus 3/9. 7 40 29, that is a 45, minus 8 is a 24, it will be 21. Wait, 21/72. Clear? Next partner is your Samli. Samli's gain, it will be new share of Samli 3/8 minus old share 2/9. Again 8 9s are 72, 9 3s are 27, minus 16, it will be 11/72. Clear? So then M is 2. Yes, Vanshika is clear. इसका आपका आ जाएगा 21/72 is to 11/72, or we can say it is 21:11. Clear? Speak बच्चे. This question is clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Wait. Attendance. चलो. Now we will do question number 14th. Moon, star, and Jupiter. It is there. Just tell me. Question number 14. Moon, star, and Jupiter. Yes, ma'am. Just read all the questions 10, 11, 12, 13. Are you able to do this? या मैं करवाऊं? पढ़ो जरा. Ma'am, done. हाँ? Done? Ma'am, will do. You will do? Okay, let's do question number 14 करवा दूं? Ma'am, 19th last वाला. 19 करवा दूं? 14 है Yes, ना तो ma'am. फिर ठीक है. चलो 19th question let me read. Okay, it's very easy again. कुछ नहीं करना है इसमें. चलो देखो क्या है यहाँ पे. क्वेश्चन क्या है? हाँ, A, B C, D are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:1 respectively. B retires from the business. It has been agreed by A, C, and D to share future profits in the ratio of 3:3:2. Calculate the gaining ratio. यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है? 4 पार्टनर्स है, A, B, C and D. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1. A, B, C, D में से B रिटायर हो गया और it was agreed by A, C and D that they will share the future profit and loss in the ratio of 3:3:2, and we have to calculate the gaining ratio. चलो. Page is visible? बोलो बेटा. Yes, ma'am. इसका फॉर्मूला जरा. Gaining ratio is equal to new share minus old share. पार्टनर्स कौन है इसमें? देखो A is to B is to C is to D. रेशियो इनकी 4:3:2:1. रिटायर कौन हो रहा है यहाँ पे? B रिटायर्स. B जो है वो अब रिटायर हो रहा है. आफ्टर B's रिटायरमेंट द न्यू रेशियो विल बी A is to C is to D. क्या रेशियो होगी बेटा? 3:3:2. ठीक है.
चलो अप्लाई द फॉर्मूला. देखो एस गेन, यस आनी यू आर राइट. को फॉर्मूला लिखो. न्यू शेयर गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. लिखो ए का न्यू है आपका आ गया 3/9 8 sorry minus 4/10 it will be 40. Then it will be 15 minus 16 in short, so minus 1/40. क्योंकि ये माइनस में है तो ये आपका सेक्रीफाइस हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज योर wait C's gain again 3/8 minus 2/10 it will be 15 minus 8 40. शॉर्ट में बता रही हूँ आपको मैं, हमने डिनोमिनेटर सेम लाने. 7/40 ये आपका जाएगा गेन. नेक्स्ट इज योर डी. यस मशीका यू राइट, यू हैव कैलकुलेटेड द करेक्ट रेशियो. सही बेटा आपका, गुड, वेरी गुड. डी का निकालो जरा. 2/8 minus 1/10 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर सेम लाने हमने. 10 minus 4 it will be 6/40. बिकॉज ये पॉजिटिव फिगर्स है हमने इसको गेन में रखा है, क्योंकि ए का नेगेटिव में, तो दैट मीन्स ए को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है अपना शेयर. सो सी एंड डी विल गेन इन विच रेशियो? इन 7:6 रेशियो. ठीक है. एंड ए विल sacrifice because नेगेटिव में फिगर आई है, that means A ने sacrifice किया है कितना? अपना 1/40 share of his share. Understood गौरी? Yes Anshika, good. Understood गौरी? Where is गौरी? Okay, got it is clear? Dear speak. I have unmuted everyone. So unmute yourself and speak. Yes. Sharon, it is clear? Urvi, Agrima, Aditi? Yes, ma'am. Okay. Aditi, it is clear? Chinmay, Gurleen, Manyata? बोलो बेटा. Vanshika? Speak. Okay. Should I start the next topic? Treatment of goodwill. ठीक है. My register is over. I start. Take out the new register. चलो. But before that, take out page number. Just wait for a while. This one. Take out this page. Treatment of goodwill. The page is visible? Yes, ma'am. चलो देखो. The next topic is treatment of goodwill. Same treatment है इसका जैसे हमने एडमिशन के टाइम पे किया था, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है. Now look, accounting treatment of goodwill. Step 1 क्या हमारे यहाँ पे? Write off the goodwill if any appearing in the balance sheet on retirement. अगर बैलेंस शीट में at the time of retirement बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल अगर गिवन है, उस टाइम पे आपने क्या ट्रीटमेंट करना है गुडविल का? You have to pass a journal entry that is all partners capital account debit to goodwill account. आपने क्या करना है यहाँ पे? सारे पार्टनर्स को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है गुडविल को. तो किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में.
ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ओल्ड रेशियो। कब करना है? जब गुडविल अपीयर होती है बैलेंस शीट। whenever the goodwill appear in the balance sheet at the time of retirement of a partner, you have to write off the existing goodwill। ठीक है, और इस एंट्री का इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो गुडविल है वो न्यू बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगी। अंडरस्टूड? नाउ द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में देखो क्या करना है हमने, वी हैव टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन द गुडविल। आउटगोइंग पार्टनर को हम लोग रिटायरिंग पार्टनर भी बोलते हैं। जो रिटायर्ड पार्टनर होगा, जो आउटगोइंग पार्टनर होगा, वो अपना शेयर भी गुडविल का लेके जाएगा अपने साथ। उस टाइम पे हमने एंट्री क्या पास करनी है? वी हैव टू पास द एंट्री कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। जो रेशियो यूज करनी है वो हमारी